Okay, students, today we are starting the past paper of kinematics. Question number 1 from your past paper file, and it is from February-March 17. Right? The question here is, a particle P moves in a straight line starting from a point O, comes to rest 35 seconds later at time t seconds after leaving O. The velocity of the particle is given by. Velocity की तीन equations दे दी गई. Velocity की तीन equations दे दी गई कि 0 से 5 तक की अगर velocity निकालनी है by using first formula, 5 to 15 by using second formula, 15 to 35 by using third formula, where A and B are constant such that A is positive and B is negative. Right? Now, show that the values of A and B are 49, and this we have to find, means we have to find the value of A and the value of B. Right? How can we calculate the value of A and B? How can we calculate the value of A and B? A और B की value कैसे calculate होगी? सुनिएगा. Any idea how to calculate the value of A and B? लिखा हुआ है it comes to rest 35 seconds later. Can I say that velocity is 0 when time is 35? In the last equation, velocity is 0 and time is 35. What is 35 squared? 1225. B. Let's say this is equation 1. Let's say this is equation 1. Now, how can we find equation 2? क्योंकि equation 2 जब तक नहीं आएगी हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. अब सुनिएगा. I'm using first equation. V equals to 4/5 t squared. And at t equals to 5, what is the velocity? It will be 20. When time is 5, the velocity is 20. When time is 5, the velocity is 20. एक चीज सुनिएगा बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला भी 5 पर एप्लीकेबल है when time is 5, और सेकंड फॉर्मूला भी when time is 5 एप्लीकेबल है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. मैंने 5 रखकर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी. अब सेकंड फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं v equals to 2t plus 10, या अब यहां पर देखिए बच्चों, वन मोर थिंग. ये टाइम को 5 जब हमने रखा है, इस 5 पर फर्स्ट एंड द सेकंड फॉर्मूला, दीज टू फॉर्मूला आर एप्लीकेबल. और 15 व्हेन टाइम इज 15, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड. व्हेन टाइम इज 15, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला, द बोथ फॉर्मूला आर एप्लीकेबल व्हेन टाइम इज 15. राइट? तो एक काम करते हैं, 5 नहीं रखिए, 5 की नीड नहीं है. अगर हम सेकंड फॉर्मूला पिक करते हैं, सेकंड फॉर्मूला v equals to 2t plus 10, और इसमें टाइम की वैल्यू 15 रखते हैं, सो 2 into 15 plus 10, रिजल्ट क्या आ गया? 40. वेलोसिटी क्या आ गई? 40 meters per second when time is 15. when time is 15. ठीक हो गया. और टाइम 15 पर थर्ड फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, v equals to a plus b t square. वेलोसिटी है कितनी? 40, इक्वल्स टू a plus b, टाइम कितना है? 15 स्क्वायर. 40 इक्वल्स टू a plus, व्हाट इज 15 स्क्वायर? 225 b.
बाय दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -1,225b। इसको रखते हैं जरा इसमें, 40 इक्वल टू -1,225b प्लस 225b। सो 40 इक्वल टू कितना हो गया जनाब? माइनस, फाइनल आंसर कितना आ गया? -0.04। द फाइनल आंसर फॉर बी इज -0.04 and final answer for A is -49. The value of A is 49 and the value of B is -0.04। फिर सुनिएगा, पहली इक्वेशन हमने कैसे बनाई? When velocity is 0, time is 35, it is given। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया? सेकेंड फॉर्मूला यूज किया, टाइम को 15 रखा, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली 40 मीटर्स पर सेकेंड। When time is 15, the third formula is also applicable। तो वेलोसिटी तो 40 आ गई, टाइम 15 के ऊपर, टाइम की जगह हमने 15 रखा, सेकेंड इक्वेशन बनकर आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यूज आ गई। इज दिस क्लियर? So therefore, can I say that the third equation is V equals to A is 49 minus 0.04 t squared। ये आपके पास बन के आ गई थर्ड इक्वेशन। समझ में आ रही है चीज? अब आइए, वी हैव टू स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है। सुनिएगा, क्या फर्स्ट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक है ना? फर्स्ट फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक। जो इक्वेशन आपको दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बनकर आएगा? कर्व। क्या बनकर आएगा? कर्व। और याद रखिएगा, अगर स्क्वायर वाली बिट पॉजिटिव हो तो कर्व कैसे बनता है? कर्व कैसे बनता है? कर्व इज लाइक दिस। और स्क्वायर वाली बिट अगर नेगेटिव हो तो कर्व कैसे बनता है? लाइक दिस। इट मींस फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला हमें कर्व कुछ इस टाइप का बनाना है, मिनिमम पॉइंट वाला कर्व बनाना है। कहां तक बनाना है? 0 से लेकर 5 तक। 0 से लेकर 5 तक। और 5 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 5 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? अगर मैं इसको 5 यहां पर रखता हूं तो कितना आ जाएगा? 20। वेलोसिटी आ रही है 5 के ऊपर 20। वेलोसिटी आ रही है 5 के ऊपर 20। दिस वन, ये कर्व बनकर आएगा कैसे? फर्स्ट कर्व इज लाइक दिस। बेटा इसमें t को 5 रख दीजिए, तो क्या हो गया? 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 एंड 5 4 जा 20। 5 4 जा 20। अब सेकेंड फॉर्मूला v इक्वल टू 2t प्लस 10 कहां से कहां तक एप्लीकेबल है? 5 से लेकर 15 तक। 5 से लेकर 15 तक। और अब आप जरा फॉर्मूला देखकर बताइए, इक्वेशन देखकर बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? yes। तो स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। और 15 के ऊपर वेलोसिटी कितनी आ रही थी? 40। तो जनाब 40 तक स्ट्रेट लाइन बनेगी। टाइम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनकर आई। बात समझ में आ रही? आफ्टर दैट 35 पर पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। आखिरी फॉर्मूला देखिए, क्या इसमें स्क्वायर वाली बिट नेगेटिव में है? जी बिल्कुल है। तो क्या होगा? कर्व डिक्रीजिंग कर्व बनकर। बात समझ में आ रही? ये आपके पास कर्व स्केचिंग हो गई और कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन ऑफ 7 4 5 6 7 मार्क्स। अभी थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करना है। 7 मार्क्स तो हुए यहां तक कंप्लीट। देयर इज नो कंफ्यूजन अप टू दिस। आगे कह रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमें कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली। एरिया अंडर द कर्व हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाएंगे। पहले फॉर्मूला पर लिमिट लगेगी 0 to 5, देन 5 to 15, देन 15 to 35। स्टार्ट करते हैं, जरा पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इज
नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है 35 पे आके रेस्ट में आ गया, तो यहां से हमें रेस्ट पर आना था बस। नाउ अब देखिएगा बच्चों, हियर द फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट 4/5 टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन में तो माशाल्लाह आप लोग हो चुके हैं एक्सपर्ट। नाउ 4/5 टी स्क्वायर प्लस सेकेंड 2t + 10, कहां से कहां तक की लिमिट है? फर्स्ट लिमिट है 0 से लेकर 5 तक, सेकेंड लिमिट है 5 से लेकर 15 तक, एंड द थर्ड लिमिट इज 49 माइनस 0.04 टी स्क्वायर। थर्ड लिमिट कहां से कहां तक? 15 से लेकर 35 तक। विद रिस्पेक्ट टू टी सब इंटीग्रेट होंगे। बात आ रही है समझ में? नाउ फिर वापस P3 पर आ गए, बल्कि बल्कि P1 पे, नॉट P3। 4/5 ये क्या हो जाएगा? t³/3 and 5 3 is 15. Here it is t³ from 0 to 5 plus 2t²/2 t² plus 10t। लिमिट्स कहां से कहां तक? 5 से लेकर 15 तक, प्लस 49t minus 0.04 divided by 3, zero point 013 t³ लिमिट्स फ्रॉम 15 to 35। बात आ रही है समझ में? अब 4/15 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5³ is 125 minus 0। What is upper limit minus lower limit? कितना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, लास्ट वाले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया आपने डायरेक्टली फ्रॉम कैलकुलेटर। So upper limit minus lower limit, the result is 300. It is 466.5. 466.5. What is the final answer? What is the final answer? The final answer is 799.8, means what is 800? 800 meter is the final answer. Any confusion? Okay, students, now question number 2. It is from October, November 17. A diagram is given. कहा गया the diagram shows the velocity time graph. सारी stories दे दी गई आपको. In the first part, show that the acceleration of the particle between 3.5 and 6. Is this? आपने इसमें दिमाग फिजिक्स वाला नहीं चलाना, मैथ्स वाला चलाना। ठीक हो गया? ये एक लाइन है। What are the coordinates? 3.5, 10. What are the coordinates? 6, -5. Are we able to calculate the gradient? y2 minus y1 over x2 minus x1. So the answer is minus 10 meters per second square. This we have to prove. It is minus 6 are right. Show that the acceleration of the particle between this. एक मिनट. What is here? It is -5. 6 minus 5, and this one is 3.5, 10. Yes, here actually this is -15. -15. So the answer is
y2 minus y1 over x2 minus x1. The answer is minus 10 meters per second square, right? After that, in the second part, the acceleration of the particle between 6 and 10. Between 6 and 10. Between 6 and 10. What is the acceleration? Means the gradient of the line is 7.5. We have a coordinate here, and the coordinate is 6 and minus 15. And here is the coordinate 10 and v. We have the gradient, right? So 7.5 equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So what is the value of v? What is the value of v? 15 meters per second. ये आपके पास v की वैल्यू आ गई. Any confusion? No. आगे कह रहे हैं the particle comes to rest at v at time t second. यहाँ पर आकर particle rest में आ गया है. Given that the total distance traveled by the particle between 0 and t is 100. Total distance क्या है? 100 का है. Find the value of t. It means area 1, let's say this is A1, this is A2, and let's say this is A3. क्या कहा जा सकता है? A1 plus A2 plus A3 equals to 100. What is A1? Is it a trapezium? Is it a trapezium? So, trapezium formula half sum of parallel sides. This side is, we don't have this value. हमारे पास ये value नहीं है trapezium का area calculate करने के लिए. हमारे पास ये value नहीं है trapezium का area calculate करने के लिए. तो trapezium का area calculate करने के लिए, let's say, मैं इसको कह रहा हूँ, let's say this is point P. हमें P के coordinates निकालना होंगे. First, we have to find the coordinates of P. For coordinates of P, ये जो red वाला point मैंने दिया गया है, it is 3.5, 10, and this coordinate is P, 0. What is the gradient of this line? What is the gradient of this line? क्या हमारे पास इस line का gradient मौजूद है? Yes, इस line का gradient हमारे पास मौजूद है. -10. -10 इस line का gradient मौजूद है हमारे पास. Again, by using y2 minus y1 over x2 minus x1 equals to -10. Cross multiplication, 10 equals to 35 plus minus 35 plus 10p. What is the value of p? 4.5 is the value of p. 4.5 is the value of p. तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसके? 4.5, 0. Do we have this point? No. इसको हम कहते हैं, let's say it is q. क्या कह रहे हैं इसको? q कह रहे हैं. इसके लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स मैं यूज कर रहा हूं. These are the 6, -15. और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? नहीं मालूम हमें. वो अब हम कैलकुलेट करेंगे. बट वी नो द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन. व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? 7.5. व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? 7.5. इसको हमने क्या कह दिया? q, 0. सो बाय यूजिंग अगेन y2 minus y1 over x2 minus x1 equals to 7.5. What is the value of q? डायरेक्टली बता दीजिए हमें. The value of q is 8. अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं. जनाब. First, I'm doing here A1. A1 equals to half sum of parallel sides. Sum of parallel sides कितना हो जाएगा? 4.5 plus 2 multiplied by height of the trapezium is 10.
यहां से A1 कैलकुलेट कीजिए, A2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4.52, 8 कितना हो गया, 8 माइनस 4.5 इज 3.5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 15, A2 जरा कैलकुलेट कीजिए, और A3 बेस ऑफ द ट्राइंगल है हाफ, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज, लेट्स से इसको मैं कह रहा हूं x, एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज v हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15, तो ये तो हो गया जनाब 7.5 x, A2 कितना आया, फिर बोले 26.25, और A1 कितना आया है, 32.5, 32.5. Now summation of all equals to 100. हम कह सकते हैं 32.5 प्लस 26.25 प्लस 7.5 x equals to 100. What is the value of x? What is the value of x? 5.5 is the value of x. So therefore, what is the value of t? यहां तक q तक कितना था t बच्चों, q तक था 8, 8 में ऐड करवा दीजिए 5.5, आंसर क्या आ गया, 13.5 seconds is the value of t. बात आ रही है समझ में? Now question number 3, it is from October November 17. A particle starts from a point O and moves in a straight line. The velocity of the particle when after leaving O is this. Find the acceleration of the particle during the first 5 seconds of the motion. Acceleration of the particle calculate करने के लिए हमें क्या करना होगा? Velocity equals to 1.5 plus 0.4t differentiated and get the acceleration equation. It will be 0.4 meters per second square. In the second part, find the value of t when the particle is instantaneously at rest. When the particle is instantaneously at rest, पार्टिकल जब इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, टाइम की वैल्यू. हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट? क्या दिस सेकेंड इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन को वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम. चलें फर्स्ट वाली को 0 से इक्वेट कर दें. 1.5 प्लस 0.4t equals to 0. What is the value of t? Minus 1.5 over 0.4. Is it possible टाइम नेगेटिव आ जाए? नहीं पॉसिबल ना, तो हटा दो इसको. ठीक हो गया, सेकेंड इक्वेशन पे आ जाए. सो इट विल बी 100 over t squared minus 0.1t equals to 0. 100 minus t cube, 100 minus 0.1 t cube equals to 0. What is the value of time? 10. Now, third part. Find the total distance traveled by the particle in the first 10 seconds of the motion. Total distance हमें पार्टिकल का कैलकुलेट करना है किसमें जनाब, फर्स्ट 10 सेकंड में. तो अब आप देखिए फर्स्ट 10 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम बन रहा है ना, वेलोसिटी टाइम. तो अगर हम 0 से 5 तक इसको इंटीग्रेट करवा दें, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 to 5 1.5 प्लस 0.4t प्लस इंटीग्रेट करवा दें कहां तक चाहिए, फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स. फ्रॉम 5 to 10 किसको करवा दें हम, 100 t power minus 2 minus 0.1t. So it will be
1.5t plus 0.2t square from 0 to 5 plus ये क्या हो गया? It will be minus 100 over t minus 0.05 t square from 5 to 15. अब कैलकुलेट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मुझे बताइए. फर्स्ट ब्रैकेट 12.5 एंड सेकेंड ब्रैकेट बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. From the second bracket it is 6.25. So what is the final answer? 18.75 meter is the final result. Is this clear? Okay, students, now question number 5. Again, equation of velocity is given. In the first part, find the two positive values of t for which the particle is instantaneously at rest. So it will be minus 0. Velocity is 0, minus 0.01 t cube plus 0.22 t squared minus 0.4 t equals to 0. T common, minus 0.01 t squared plus 0.22 t minus 0.4 equals to 0. What are the two values of t? 2 and 20. These are the two values of t. In the second part, find the time at which the acceleration of the particle is greatest. First, make an equation of acceleration. Differentiate this. So 0.01 multiplied by 3 is with negative sign minus 0.03. 0.22 multiplied by 2 is t square. 0.44 t minus 0.4. SI. Any idea to calculate the value of time and acceleration in maximum? For example, we have an equation y equals to 2x squared, y equals to minus 0.03 x squared plus 0.44 x minus 0.4. Find out the greatest value of x. How can we calculate the greatest value of x? Differentiate the equation. Differentiate the equation. So differentiate the equation. So minus 0.03 multiplied by 2 is minus 0.060 plus 0.44. Differentiate the equation and equate with 0. What is the value of t? 7.33. Second is the greatest, is the time at which we have the greatest acceleration. Okay, in the last part, what we have to do in the last part, displacement calculate करना है हमें. तो displacement calculate करने के लिए हमें क्या करना होगा? Integrate करना होगा velocity को. Minus 0.01 t cube plus 0.22 t square minus 0.4 t. कहां से कहां तक करना होगा? जो हमने इंस्टेंटेनियसली रेस्ट 2 से लेकर 20 तक के लिमिट्स लगाएंगे. सो इट विल बी माइनस 0.01 t पावर 4 over 4 plus 0.22 t cube over 3 minus 0.4 t square, मतलब 0.2 t square over 2. लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं? 2 से लेकर 20 तक की. लिमिट से अप्लाई करने के बाद व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? सो द फाइनल आंसर इज 107 meters. फाइनल माइनस इनिशियल वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे. इज दिस क्लियर? होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन नंबर 5.